until the March of this year, March of 2024. A miraculous surgery, one that lasted 12 hours, and the doctors of Ganga Ram Hospital performed a successful, what is now called a bilateral hand transplant, and gave him both his hands back, as you can see on your screen. Yes, hand transplant, and we were as stunned as you were. The surgery involved connecting every artery, every muscle, every tender and nerve between the recipient's arm and the donor's hands, but it was done miraculously. It is indeed fantastic work by the doctors, and we will meet them on the program shortly from now. But it is not just a scientific discovery that would have, or a marvel that would have made this possible. The hero in the story is the donor. The only way the doctors could have performed the surgery is they had a matching donor. And on that note, it's time to meet the hero, Meena Mehta. 62-year-old Meena was a retired vice principal from Delhi's Greenfield School. An unfortunate brain hemorrhage meant that she was declared brain dead, and there was no chance of a survival or chance of leading a normal life. But Meena had pledged all her organs to be used after her death. Not only her hands now, as we know, have changed this painter's life for the better, but her organs changed the life of 3 more individuals. Kidney, liver, cornea, all have gone to 3 other patients, all of whom continue to lead a beautiful life. What a marvelous way to die or to go, right? By giving so many others around you a beautiful reason to live. Now, that story is a story of hope, and that certainly brightened up our day. So we had to speak to all the stakeholders like we always do. Joining us now on the program is Raj Kumar, the painter, the recipient of these hands, who now gets to lead a really nice life. We hope so. He's still in recovery. Raj Kumar ji, namaskar. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. राजकुमार जी, मैं देख पा रही हूँ कि आपके हाथ में अभी सर्जरी के बाद काफी अभी टाइम लगेगा ठीक होने में, पर हमने वो वीडियो देखा कि कैसे आप अपने हाथ हिला पा रहे थे, मूव कर पा रहे थे. आई विल रिक्वेस्ट माय प्रोड्यूसर्स टू प्ले द वीडियो वेयर यू कैन एक्चुअली सी हिम यूजिंग हिज हैंड्स एंड हाउ लाइफ has gone for the better for him. But राजकुमार जी, अभी जब हाथ वापस लग गए, मैं पहले जानना चाहती हूँ कि अभी पेंट ब्रश उठाने का मन कर रहा है फिर से? अभी नहीं मैडम, आगे चल के उठा सकते हैं. आगे चल के उठा सकते हैं. कि आगे चल के उठा सकते हैं. हाँ जी. कभी सोचा था कि किसी और के हाथ ऐसे इस्तेमाल में आएंगे आपके, और कैसे आपकी लाइफ अभी बदलने वाली है? ना, हमने तो अपना जीवन खो दिया था, बाकी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये हमारा हाथ नया लग जाएगा, चमत्कार हो जाएगा. ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते. गंगा राम में बड़ा धन्यवाद करता हूँ उन लोगों को, डॉक्टरों को. और मीना जी, जिनके हाथ लगे, जो मैच हो पाए. We seem to have got a glitch on his audio. While we fix that line with him, let me also cut across. Let's cut across to the doctors as well. Joining us now is Dr. Mahesh Bangal. He is the chairperson of the Department of Plastic and Cosmetic Surgery at Ganga Ram Hospital. Joining us is also his colleague who's been helping him, and the whole team of doctors who actually helped make this entire miracle happen. Dr. Mahesh, welcome to the program. Thanks so much, and congratulations. That's my first instinct. What a beautiful way to have given somebody a life back. Somebody to go back on, they say go back on their feet, but go back and paint, do beautiful things with their hands. And what a beautiful way to actually say goodbye to one life, to actually make use of it. So, my first question is, of course, this is a huge, great effort by your team. I'm told the surgery lasted for about 12 hours, and it's not an easy one. Tell us the entire process. How long did it take to actually make it happen, and how common is really hand transplant in India? Good morning, ma'am. And hand transplant is not very common in India. It has been started, first hand transplant has been done in Cochin in Amrita Hospital.
And later on, nowadays only 2-3 centers are mainly doing a hand transplant. But in North India, this is the first center which we did a bilateral hand transplant. What happened is that for doing any transplant, we have to take permission from the government. We have taken permission from the Delhi government, and we have few patients in our list who wanting or whose life can be improved by hand transplant. But the problem which we were facing is to finding a suitable donor. For finding a suitable donor is a very difficult problem, because people are willing to donate other organs like kidney, liver, heart, but even people are not knowing that hand can be transplanted. So they are not aware about this process. So they are not even know that hand can be donated or it can be used for another person to change their life. So that is the main issue with us, that how or from where we find a suitable donor, because donor has to be matched along with their blood group and other tissue matching. So we find few donors, but according to their matching, it was not possible for Raj Kumar. So finally, what happened is that in our hospital, our own hospital, we find a donor, Mrs. Mehta. As you already explained about the Mrs. Mehta. So as soon as we were informed that there is one patient in our ICU which is brain dead and they want to donate their hands, so we called the Raj Kumar and we admitted him, and tissue matching was done and everything was perfect. So we planned the operation. Wow. And we have a big team basically. We have a big team. Myself, Dr. Gambhir, Dr. Anubhav Gupta, Dr. Bhim Nanda, Dr. Nikhil Junjunwala, and there are many other junior doctors and anesthetists, orthopedician, Dr. Brajesh Nanda. We have a whole team of, because and Dr. Nikhil is sitting right there as well. I know. Right. And I know Dr. Nikhil also played a crucial and a critical role in making this happen. Dr. Nikhil, tell us a little bit about hand transplants. And this could apply, I'm assuming, to legs as well, to other sort of organs in the body. So a lot of us know about eye donation. A lot of us know about other internal organs. But like Dr. Mahesh was rightly pointing out, there is still a bit of taboo involving limbs. Right, because when you say a goodbye, when you cremate body or when you bury the body, those parts are then missing. And I understand it's difficult for families to take that call and actually make it happen. Also, interestingly, while we were speaking earlier, you pointed out that when hands are actually, it's a critical moment when the hands have to be taken from the donor. Explain to us what exactly happens. Good morning, everyone. See, what happens is when you take an external organ, because of our religious beliefs and all, the donors don't really have an attitude to do hand donation, because in our Hindu religion, everybody wants to cremate the body with external organs intact. You can open the abdomen, you can take all the internal organs, but they don't want to donate the external organs. This is what happened to us for the last 1 year. But Mrs. Mehta was like quite willing, and she was very, very supportive to, and the family was very supportive to donate all her organ. And hand transplant, I will say about hand transplant, India is going to be a leader in the world in hand transplant, because it's already been going on in South India, and this was the first case in Delhi. And we have got so many calls from other patients who have lost their hand to get their hand transplanted. So we want to make awareness about in the general public to make more and more donation of hand, so that everybody who has lost their hand can get a hand and get a new life, so that they can support their family. That's right. You're absolutely right. We have the
we have the tech, we have the infrastructure required to do it, we have the doctors trained to do it and do it successfully. All we need is proactive donation, and all we need is awareness to be driven home that people can actually do this and change lives. I'm told we have Raj Kumar back with us. Raj Kumar ji, मेरी आवाज इस समय आ पा रही है आपको? हाँ जी जी राजकुमार जी, अभी आपके हाथ वापस आ गए, डॉक्टर्स ने इतना बढ़िया काम किया. अभी आप अगर मीना जी की फैमिली जिनके हाथ आपको मिले फाइनली, उनसे कुछ कह सकते तो क्या कहते? उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे नया जीवन दान दिया है, उनसे मैं बहुत खुश हूँ. जी, और अभी हाथ आपने जब करा, कितना टाइम लगेगा रिकवरी में? कब तक आपको डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आप वापस जा सकते हैं? आप पेंटिंग करते थे पहले, वापस पेंटिंग कर सकते हैं? 5-6 महीना बता रहे थे. जी जी. हाँ 6 महीना लगा. All right. Can I go back to Dr. Mahesh on that note? Dr. Mahesh, is it, will life go back to normal and usual for Raj Kumar? Or are there some things that, there are limitations to this? Actually, what happened that in hand transplant, it is not like a kidney and liver. Once you attach the kidney and liver, they start functioning basically. If you do a kidney transplant, they start filtering the urine immediately basically. Particularly in hand, it is not like this. In hand, what happens that it all depend on regeneration of our nerve. And because of the nerve, because they give current to the muscles and then they work and then our hand work basically. So what happens is when we join the nerve, it grows very gradually and very there is a speed of growing of a nerve. A nerve grow 1 millimeter per day. So when we join the nerve at a one place, say in this case we have joined the nerve above the elbow, so it takes minimum 6 to 8 months to reach to the muscles so that he can move his fingers. So I think it will take 6 to 8 months to move his fingers, and nearly maybe another 6 to 8 months to do a fine movements of the fingers. So I think 1 to 1.5 year will be the time that he will do a reasonably good function by the hand. But 100% function is not possible, particularly in these replants. Maybe he will be able to do a 70 to 80% of the functions. So I think it's a good reasonable function so that person can enjoy or can earn his life. So that is what happened in a hand transplant cases. Nice. I also like how a woman's hand has gone to a man, but it made no difference. It's just about attaching. It's so beautiful. This entire story really is. But on that note, let me also bring in, like I keep saying, the hero of this story, which is Meena Mehta. She's not with us today, but her life truly deserves to be celebrated. And joining us next is his nephew. Her nephew, beg your pardon, Javed Mehta is with us on the program along with his wife. Namaskar, Javed ji. Thank you so much for speaking with us here on the Breakfast Club. Before you sort of came in, I was just telling everybody, मैं सबको बता रही थी कि क्या beautiful तरीका है एक जिंदगी को goodbye बोलने का, दूसरों को जिंदगी देते हुए. आपकी बुआ जी ने पहले ही आपने मुझे बताया कि कैसे प्लेज करे थे अपने सारे पार्ट्स, पर हमें एक बार जरा लेकर जाइए कि उनको हुआ क्या, कब ये डिसीजन लिया गया और किस समय उन्होंने डिसाइड करा कि अपने सारे ऑर्गन्स वो प्लेज करेंगी. उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था. जब हमें पता लगा कि उनको ब्रेन हेमरेज हुआ तो हमने गंगा राम को एडमिट कराया. तो 2 से 3 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि इनकी रिकवरी मुश्किल है और ये ब्रेन डेड हो रहा है, और उन्होंने फिर ब्रेन डेड की हमारे को बताया कि इनका ब्रेन डेड हो चुका है, अभी रिकवरी पॉसिबल नहीं है. तब हम लोगों को हुआ कि ऑर्गन डोनेट कर देने चाहिए, यदि ऑर्गन डोनेट हो सकते हैं तो वहां पे गंगा राम में हमने बात की तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल है और हम लोग करते हैं. तो हमने फिर उनको बोला कि हमने ऑर्गन जो है डोनेट करने हैं, क्योंकि उनकी इच्छा थी. कई बार जैसे हम आपस में बात करते थे तो उन्होंने कई बार इच्छा जाहिर की थी कि मेरे ऑर्गन्स जो है डोनेट कर देना, किसी के काम आ जाएंगे. तो फिर वहां पे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा ठीक है,
तो उन्होंने ऑर्गन्स का हमारे को बोला, तो हमने भी हाँ भर दी कि हाँ ऑर्गन डोनेट करने हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे अब जो है हैंड्स भी ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। ये जब उन्होंने बोला तो थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि हैंड्स जो है वो विजिबल होते हैं और ना वो देखते हुए थोड़ा सा डिसीजन हार्ड था। एक बार हमें भी लगा कि भाई हैंड्स को हम मना कर दें, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, किसी के काम आ सकती है, उस चीज को काम आ जाना चाहिए, तो फिर हमने हैंड्स के लिए भी हाँ भर दी और डिसीजन अच्छा रहा जी। एक फैमिली की जान बच गई, जो थे वो हैंडीकैप थे, उनको अब यूज में आ रहे हैं, हमें उस दिन से मिलकर भी बड़ा अच्छा लगा। जी, मैं ये पूछते जा रही थी आपसे कि आप उनसे मिले होंगे। आपने बताया कि आपकी बुआ जी थी, बट वो आपको राखी भी बांधती थी और आपको एक समय पे लगा कि आपने वो हाथ खो दिए, बट अब फाइनली आप उनसे मिलकर कैसा लगा? अब आप अपना डिसीजन के बारे में क्या सोच रहे हैं कि आपने हामी भरी थी, अब कैसा लग रहा है? हाँ जी, हमें गंगा राम से फोन आया था जिस दिन उनका डिस्चार्ज होना था, उन्होंने हमें बुलाया था उनसे मिलने के लिए। उस फैमिली ने भी इच्छा जताई थी हमारे से मिलने के लिए, तो उनसे मिल के और वो हैंड्स को लगा देख के और वापस थोड़ा सा वर्किंग देख के हमें भी बड़ी खुशी हुई। हमें लगा जैसे हम हमारी बुआ जी के हाथ हमारे साथ ही रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ ही रहेगा। उनकी आइज भी डोनेट की गई, उनके लीवर भी दिया, किडनी भी दी, सब लंग्स भी दिए, तो वो सब जो है ऑर्गन कहीं ना कहीं किसी न किसी की लाइफ में अब काम आ रहे हैं, किसी न किसी की जान बची है उससे। और इनको इन फैमिली से भी मिलके बड़ा अच्छा लगा। ये लोग भी कह रहे थे कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और ये लोग बड़े थैंकफुल थे। बाकी भगवान की जो इच्छा। जी दिव्या जी, मुझे बताइए, ये काफी टफ डिसीजन रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ। हम सब यही बात कर रहे थे कि ऑर्गन डोनेशन में इंटरनल ऑर्गन्स देना आसान है एक तरह से, अगर पहले तो उसके भी नंबर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स देना आसान है क्योंकि आप उसको सूचर करके जब आप गुड बाय बोलते हैं किसी को, तो आप एक फुल फॉर्म में देते हैं। यहाँ हमें बताया गया कि डॉक्टर्स ने उसे एक आर्टिफिशियल लिम्स लगा के दिए थे, सो दैट जब आपने उनको गुड बाय बोला मीना जी को, तभी वो पूरे फुल फॉर्म में थी। तो आप बता सकती हैं उस समय क्या चल रहा था? फैमिली के लिए बहुत ही टफ डिसीजन रहा होगा। हाँ जी, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जो काम वो बोलती थी, सबको इंस्पायर करती थी, आखिर उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, वो करके दिखाया, और भगवान जी ने भी उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए कि वो सब ये सब डोनेट कर सकी। और थोड़ा सा मैं ये भी बोलना चाहूंगी, बहुत इमोशनल था हम लोगों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि इनकी सिस्टर नहीं है और वही उनको राखी बांधती थी जब उनका ब्रेन डेड हुआ। और जब हमसे हैंड्स के लिए बोला गया, तो इनको एक ही बात यही लग रही थी कि मेरे को अब राखी कौन बांधेगा। लेकिन जब उनको हैंड्स के लिए बोला गया, तो हम सब ने यही बोला कि देखो उनके हैंड्स रहेंगे, आप अलाउ कर दो उनको। तो अब सच में आज 45-46 दिन के बाद उनके हैंड्स देख के यही लगा कि जो डिसीजन हमने लिया, हमारे लिए तो जो है सो है, लेकिन जिसको लगे हैं वो अपनी रोजी रोटी कमा पाएगा, इवन अपने आप से खा पी पाएगा, अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए वो अपने हैंड्स यूज कर पाएगा, जिसके लिए वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था। तो अब हमें ये अपना डिसीजन अच्छा लग रहा है कि हमने ये डिसीजन लिया उनके लिए, और वो ये ही चाहती थी। अब उनके जाने के बाद हम ये चाहते हैं कि ये ऑर्गन डोनेशन का जो प्रोसेस है, ये लोग इसको अच्छे से समझें और इसके लिए और आगे आए। हमारी पूरी फैमिली ने भी अब प्लेज ले लिया है कि हमने तो करना ही करना है, लेकिन हम ये सबको बोल रहे हैं कि इंस्पायर कर रहे हैं कि आप लोग भी करो, और ये आपके थ्रू ही होगा। हम 2, 4, 10 लोगों को बोल पाएंगे, आप नेशनल टेलीविजन पे ये सब करेंगे, तो ये सब लोग इससे इंस्पायर होंगे। जी बिल्कुल, हमारा भी यही मोटिव है, हम यही करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग हमें इस समय देख सकते हैं कैसे साइन अप करा जाता है ऑर्गन डोनेशन के लिए, उसके भी डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं। जो भी anybody who's interested, please sort of take a recording of this, send it out to your family and friends. Just look at the joy on their faces and the satisfaction that they have of having done this. It's a different story altogether. So Divya ji और जावेद जी, बहुत बहुत congratulations आप लोगों को। उनकी, और देखिए सोच तो उनकी थी, पर उनकी विशेस फुलफिल करने के लिए बहुत बहुत करेज चाहिए होता है। तो congratulations आप लोगों ने जो किया उसके लिए।
सोनल, मैं एक बात और कहना चाहूंगी। एक उनका गाना था फेवरेट, जी, वो हमेशा जी। गाती थी, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सवा बागे वफा में। और ये वो करके चली गई हैं। आज वो सच में पूरे इंडिया में कहा जहां जहां से जिस जिस पेशेंट को वो मिला होगा वो वहां पे महक ही रही हैं, सच में महक रही हैं वो। What a beautiful, beautiful answer that is, दिव्या जी। मुझे लग रहा है कि आई एम श्योर मीना जी बहुत ही अमेजिंग इंसान थी, और आपने राइटली कहा ये गाना तो बहुत ही सिंबलाइज करता है उन्होंने अपनी लाइफ किस तरह से जी और किस तरह से एंड करी, वो भी। थैंक यू सो मच हमसे इतना बातचीत करने के लिए, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए, और इतने लोगों को इंस्पायर करने के लिए। आप सही कह रही हैं कि वो नहीं है, लेकिन उनके थ्रू कितने लोग आज अपनी जिंदगी अच्छे से जी पा रहे हैं, तो ये बहुत बहुत ही उम्दा बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोग भी इसके लिए प्रोग्राम बना रहे हैं और ऑर्गन डोनेट को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो इस तरह यदि सारे मिल But he lost all hope.